अस्सलाम वालेकुम। बी गुल, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। तारुफ कराना आपका, पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लगता है कि यू आर ऑलरेडी सो मच वेल नोन, बट No, we know each other. Ax and I know each other quite well. या बट So yeah. वैसे ही सबके जिन जो भी हमारे पॉडकास्ट सुनेंगे व्हेन इट्स ऑन ए, मैं बताती चलूं कि बी गुल जो हैं वो बहुत ही मशहूर और मारूफ प्ले राइट हैं, डायरेक्टर हैं, और एक हसास दिल रखती हैं, इसीलिए हसास मौज़ूआत पे लिखती हैं। और डायरेक्शन उनकी बेइंतहा हसास होती है। सो हसासियत हर जगह आपको बीगुल के काम में नजर आती है। सो दैट इज हाउ आई वुड डिस्क्राइब यू, बीगुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडेज पॉडकास्ट। Thank you, Shi. It's always a बेसिकली, pleasure. I learn a lot. thank you so much. Thank you so much. We actually are a bunch of very passionate and also, I think, a little crazy people who don't go after money but just follow a passion. So this is actually a project that we are doing on sexualized violence, ऑनलाइन वायलेंस। और ये उस वक्त मुझे ख्याल आया था जब से सोशल मीडिया का जोर शुरू हुआ है, स्पेशली ट्विटर। ट्विटर हमारे यहाँ इतना नहीं, बट स्टिल ऑफ एंड ऑन आता ही रहता है। बट ट्विटर पे, फिर इंस्टा पे, फेसबुक पे, इन पे जब आप खवातीन की जो दुर्गत बनते हुए देखते हैं, when as soon as they open their mouth, when they comment on something which doesn't go with the prevalent narrative, patriarchal narrative. So the kind of language used and the kind of abuses which are used, that actually bothered me a lot. And I think it bothers everybody who has any kind of sense in them, women. So we thought of doing a project which would be looking at this side of social media, and also not just look at it but also see what can be done. So what we are doing, we are doing 365 days of posts, and Right. every day Ux brings out one post from somebody who's either been a victim, who's experienced harassment, who has something to say about harassment. And alongside, we are conducting focus group discussions. We are doing these podcasts with people who have opinion on this. And we are compiling a compendium of these Okay. words, because we tried to approach, of course, X and Meta. Both X wasn't very interested, but Meta somewhat gave us a better response. So we are preparing a sort of putting together a compendium, and we worked with Melt Waters, जिन्होंने हमें पूरा बताया कि किस तरह से ये चीजें उठानी है. And my team is busy doing that because we want to pick up these words and translate them in English. And you can imagine Right. what a task it is to translate those abuses, that language, which always tears a woman apart. Whether it is two men talking about each other, or whether it's about women, but it's always a woman's body and her body parts and her sexual relationship or her Yeah. sexual activity which comes in. So that is in a nutshell what this podcast would be about. So you being there in the limelight, people, and having written things which obviously don't go with the prevalent narrative, how have you faced criticism, especially on social media? जी, एक तो thank you so much for working on this extremely important subject, जिसका हमारे यहाँ कोई knowledge या education ही नहीं है, मीडिया रिलेटेड किसी भी चीज की, कि रिस्पॉन्सिबल कैसे होते हैं आप when you're online, and क्या space और boundaries होती हैं. Because I'm directly related with this showbiz industry, which is a target all the time, and people think it's the free port. यानी यहाँ तो आप जो खवातीन काम कर रही हैं उनके तो कैरेक्टर असैसिनेशन तो बनता ही है, क्योंकि उनका तो कैरेक्टर नहीं ठीक हो सकता. That's why they end up here.
Yeah. So they take this liberty, and when I say that, मैं बहुत अच्छे ठीक ठाक मोतबर पढ़े लिखे लोगों की भी बात कर रही हूँ उसके अंदर, कि that's the entire idea behind it. एक perception है कि जो इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं वो ऐसे हैं, तो उनके बारे में तो आप कुछ भी कह सकते हैं, इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन बोथ, बट ऑफ कोर्स वुमेन, बिकॉज हमारी तो सोसाइटी में औरतों को हर वक्त टारगेट किया जाता है। तो आई थिंक जो फर्स्ट उसके ऊपर लेती हैं बेचारी सबसे ज्यादा, जिनके ऊपर ब्रांड आता है, वो हमारी एक्टर्स हैं। उनको, क्योंकि उनका फेस है, उनकी रिकग्निशन उनके फेस के थ्रू होती है, दे आर देयर ऑन द स्क्रीन, एंड द वल्नरेबिलिटी ग्रोज, एक्चुअली मल्टीप्लाइज व्हेन दे आर देयर ऑन द स्क्रीन। तो वो तो कुछ भी, आपने जैसे हमारे बहुत सारे उनके ऊपर देखा होगा, कुछ भी कहते हैं और कहते चले जाते हैं। बहुत सारी फिर उसके बाद ये भी होता है कि इफ दे somehow, अगर उनकी कोई पर्सनल आपकी कोई चीज उनकी मिल गई है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉन्वर्सेशन और इमेजेस और एनीथिंग, तो उसको फिर इतना ब्लैकमेल करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको डिजिटली मैनिपुलेट करना, और फिर उसको टारगेट करना उस लड़की को, कि वो बेचारी फिर उसके बाद उसको समझ में नहीं आती हाउ टू फेस द सोसाइटी, हाउ टू फेस हर सेल्फ, हर फैमिली, उसको इस कदर रिडिक्यूल कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो रेपुटेशन ऑफ अ वुमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप उस रेपुटेशन के ग्राफ से कहीं डेविएट करते हैं, तो फिर तो आप, बस फिर आप, तो फिर तो आप और वो है ना, बिल्कुल अवेलेबल हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ अब्यूज अगेंस्ट यू। More vulnerable and available, of course. एब्सोल्युटली। तो Yeah. वो तो वी फेस दिस ऑल द टाइम। अच्छा, मेरे साथ ये होता रहा बिकॉज मेरी पहले फेस रिकग्निशन इतनी ज्यादा नहीं थी, बिकॉज इट वाज माय स्क्रिप्ट, माय नेम, so somebody else was playing what I was writing, so I had that advantage to be at the backstage or behind the scenes for a while. फिर उसके बाद when I came forward, or whenever people wanted to talk to me and I was open about it, whatever I was writing, तो बहुत 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 बातें सुनने को मिली, ऐसी ऐसी मिली कि a few of my friends think this is not good for your mental health. You should not even read these comments. You should not even, bother about it. तुम उसको देखो ही मत, उस तरफ जाया ही नहीं करो। तो मैंने कहा दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, कि मैं ना पढ़ूं या मैं उसको इग्नोर कर दूं, कि अगर वो वहां है तो मैं पढ़ूं ही नहीं, मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी इफेक्ट हो जाएगी। I actually, Justine, very responsibly go through it. And I want to see how people are judging other women, and how they're judging the content I'm writing or producing. उसके ऊपर बहुत 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 बातें आती हैं, और बड़ी तकलीफदेह चीजें होती हैं, उसमें थ्रेट्स होते हैं, उसमें आपकी फैमिली तक को टारगेट कर दिया जाता है, बच्चों को और किया जाता है। बच्चों को किया जाता है। मेरे साथ 3 दफा ये हो चुका है कि इनके बच्चे कौन हैं, उनकी आइडेंटिटी आप पता करें, और उन्होंने कैसी अपब्रिंगिंग की होगी, इस तरह की बातें। फिर ये कि ये मेरे बारे में तो ये बहुत अरसे तक इट वाज अ हेडलाइन व्हिच वाज गोइंग ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट नो हु वाज द वन हु इनिशिएटेड इट, बट औरतें बिगाड़ने में बीगुल का बहुत बड़ा हाथ है। ये उर्दू में लिखी हुई एक हेडलाइन थी जो बहुत कि बिगाड़ा है बिल्कुल आपने। बहुत बिगाड़ा मैंने, तो वो सर्कुलेट करती रही, सुना। वो जब सर्कुलेट करिए तो आइडिया एक, मैं सोचती थी कि अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको क्यूरियोसिटी होगी कि क्या बिगाड़ा होगा, क्या किया होगा, सो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट। तो मैं तो कहती कि गोस इन माय फेवर, के अच्छा जरा देखे कि मैं कैसे बिगाड़ रही हूँ। बट नॉट एवरीबडी हैज दिस स्ट्रॉन्ग नर्व्स, और और इवन मैं ये भी कहूंगी कि क्यों कोई इतना इस चीज के अंदर एग्जॉस्ट हो, कि भाई आपकी ऑनलाइन हरासमेंट ही खत्म नहीं हो रही है, मतलब क्यों हम इसमें एग्जॉस्ट हो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम वहां पर क्यों जाए। और अब ये भी कहा जाता है कि जस्ट डोंट इंगेज, डिसंगेज ऑनलाइन, आप किसी के साथ, आप किसी को जवाब ना दें, इग्नोर करें। तो इतना खौफ है ना, देयर इज अ फियर which is behind it, कि let's not engage with these people who are there। तो उनका मुझे लगता है कि the open space, the power they exercise on against women through online violence is very very terrifying and worrisome। तो बहुत तकलीफ दे ये बात है, and also for the young girls,
who working in the offices, घरों से निकलती हैं, they face a lot of harassment, online harassment. And I Uh, think this is probably a very calculated. It's not just a spur of the moment. I would say it's a mindset, of course, but it's also a calculated move to push women out of the space, so that Absolutely. they don't. And I mean, Have a they voice. so बिल्कुल. threatened, they get so alarmed, they get so Hmm. afraid to speak up that they leave the space. And this is It's what true. we want to, that's what we are struggling against. That's what we want to, we want to get that space back for women. And that's why we are speaking to so many people on, what is it that makes somebody use this kind of vile language or comments? I think the same for me. A physical violence or an online violence is not different, Mm-hmm. because it's coming from the same mindset. और अगर आप फिजिकली किसी के साथ एक वायलेंस करते हैं और आप वायलेटेड फील करते हैं, तो मुझे लगता है मैं तो ऑनलाइन भी उतना ही फील उसकी फील करती हूँ उसकी इंटेंसिटी को. Because if somebody is crossing that boundary and trying to take my space away, या मुझे वो harass कर रहे हैं, तो मकसद या mindset या एक sentiment तो वही एक ही है जिससे ये चीजें जनरेट हो रही हैं. और बल्कि मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल भी कोई मीडिया लिटरेसी के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल मीडिया लिटरेसी के ऊपर काम नहीं किया जाता, और हम एज अ नेशन भी बिल्कुल इलिटरेट हैं मीडिया रिलेटेड चीजों के ऊपर, तो एक और जगह मिल गई है पेट्रियार्कल सोर्सेस को मजीद वायलेंस करने की. क्योंकि ये तो बहुत ही सुकून है ना कि आपने अपने फोन पर बैठ के किसी भी कोने में एनोनिमसली किसी को भी कुछ भी कर दिया, and then it just goes on and on like wildfire if the person is in some kind of limelight. I mean, we know stories of so many of our top stars. I don't want to take names, but क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया. They're sitting with somebody, उसकी तस्वीर ले ली. If she's smoking, उसकी तस्वीर ले ली. You know? तो आप किसी की पर्सनल प्राइवेट स्पेस में चले गए, आपने उसकी कंसेंट के बगैर एक तस्वीर भी खींच ली, फिर आपने उसको वायरल भी कर दिया, और फिर आपने उसके बारे में जो चाहा उसे कहा. It is so traumatizing for a woman because she's put in a space कि जहां पर उसे कहा जाता है कि now justify your act. और लीव. बिल्कुल. और लीव. क्यों किया आपने? तो तौबा कर लें. अच्छा, तौबा भी नहीं होती. तो वो तो कबूल आपने ही ये नहीं होती औरतों की. सिर्फ मर्दों की. नहीं. It's मर्दों की like तो that, सोच के ही हो जाता नियत से. if a woman is smoking, so are men. And Absolutely, it has where is nothing to it do with written? gender. Yeah, where is it written that this is haram for women and it's halal for men? Uh, Exactly, Everything that's exactly. haram is for both. Everything that's halal, it's for both. So there's no gender Yeah. discrimination when it comes to halal and haram. I mean, from zina to एब्सोल्युटली. anything. Uh, एब्सोल्युटली. और फिर अगर वो हेल्थ इश्यूज भी हैं, अगर आप कहें कि जी हेल्थ कंसर्न हैं आपको, तो वो दोनों के लिए है ना. दैट्स समथिंग एल्स. ठीक है. yeah. अगर आप इतने किसी की फिक्र कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी सेहत के लिए सिगरेट अच्छी नहीं है, ना पियो, इज समथिंग एल्स. बट यहाँ तो आवारा औरत जो है वो सिगरेट पीती है. Hmm. बच्चलन औरत जो है वो सिगरेट पीती है, और वो जीन्स पहनती है और वेस्टर्न कपड़े पहनती है. और आपको शायद सुन के हैरत होगी कि ये ट्रेंड आज का नहीं है. मैं जब ये अक्सर हमारा जब हम मॉनिटर कर रहे थे मीडिया इन द लेट 90s ऑल्सो, तो तस्वीरें छपती थी. इस वक्त ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, अखबारों में हम्म. तस्वीरें छपती थी आसमा जहांगीर सिगरेट पीते जी हुए, जी. सिगरेट पीते हुए. हम्म. अब मैंने कभी नहीं देखा कि जी शेख रशीद सिगार पीते हुए या फलाना हम्म. सिगरेट पीते हुए. वाई वाई. And वो लोग छापते भी थे अखबारात, और अच्छे मोतबर अखबारात होते थे. ऐसे नहीं था कि कोई जी 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 जी. बिल्कुल रैग प्रेस हो जो आप को टारगेट कर रहा हो. सो या दिस इज व्हाट एक्चुअली alarms people like us, which also hurts people like us, because these are the words that pinch you, even if I am not personally targeted. But when I read those words, I also Yes. see a link. I don't know if you'll agree with me, Bigul, because I think हमने भी, as in women in general, have given this kind of legitimacy to men when they would joke about women, the wife jokes, जी जी. which which go like viral. And we ran a campaign called hashtag not funny, because
these are not funny jokes, and I still continue to do that on my personal groups, and they're pretty scared of me. They always think twice before putting up a joke. But I think it starts with those jokes, and when they see there's no response, then they move one step forward, and then they move one step forward. तो वो आई थिंक जो आपने बात की मीडिया लिटरेसी की, लैक ऑफ अवेयरनेस की, आई थिंक, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज इट दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म शुड बी put in place to make women and girls aware of their rights, of their to freedom of expression, to freedom of speech, and also to protect themselves? तस्नीम, इट्स अ टॉल ऑर्डर जी। बहुत ही मुश्किल काम है ये करना हमारी सोसाइटी के अंदर, इसलिए कि हम तो अभी अब उसी से किसी और चीज से नहीं फारिग हुए थे कि मीडिया का एक बॉम्ब हम पे आके गिरा है, तो हमें एक नया एवेन्यू मिल गया जहां हमें जंग लड़नी है। अदरवाइज स्टिल व्हाट इज गोइंग ऑन, लुक एट आर बाकी जो हमारी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, फिजिकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो कहाँ, वो तो बढ़ते जा रहे हैं, कम तो कहीं से नहीं होते, आपको नजर आ रहे हैं। और कितने तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं वो इस कदर तकलीफ दे होते हैं, और वो दे जस्ट कि समझ में नहीं आता कि इस पे बात कहाँ से शुरू की जाए। इतनी तकलीफ दे होता है, यू गो स्लीपलेस फॉर नाइट्स कि ये क्या हो रहा है। बट आपने जैसे कहा, क्लासिक मिसोजिनी विच इज सो डीपली एम्बेडेड इन द सोसाइटी, and it's not only men, women also endorsing it at various levels, unfortunately. और वो जो ये बात है कि हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मैं तो हर जगह ये कहती हूँ कि बहुत जगह ये पे हम पे आता है इल्जाम कि जी आप बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। उनका क्यों नहीं होंगे अग्रेसिव? अग्रेशन के खिलाफ हम खड़े होकर क्या करेंगे? मतलब हम वी हैव टू बी अग्रेसिव, वी हैव, अदरवाइज तो जब नहीं थे अग्रेसिव और सबमिशन करते रहे तब तक तो हम यहाँ पहुंचे हैं कि आपको ये, और प्लस ये भी एक आइडिया है ना कि जैसे हम आपको अपने आपके राइट्स देते हैं, तो आई जस्ट कीप ऑन टेलिंग कि आप कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब है आपने कब्जा किया हुआ है इतने अरसे से, या तो आप ये कन्फेस करें, या हाउ डू यू थिंक दैट यू आर द वन हु हैव टू गिव अस आवर राइट्स? आई मीन, डिड वी गिव यू योर राइट्स? बिकॉज इतना कुछ तो दे दिया, इतने हुकूक तो दे दिया, अब और क्या दे औरतों दिया, को चाहिए? और क्या देना? क्या मतलब हमने आप, ये तो हमारे हैं, बॉर्न, मतलब एक हमारी एक इंसान के तौर पर अगर हम जेंडर हमारा ये है तो ये हमारे इंसानी हकूक है, तो इसमें आप किसी को देना लेना का सीन तो यहाँ नहीं है। सो आई डोंट गेट दैट माइंडसेट आल्सो कि इतना तो दे दिया। जैसे छोटी छोटी बातें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा हस्बैंड है, वो रोकता टोकता नहीं है, ही लेट्स यू वर्क, ही लेट्स यू डू दिस, आई मीन लेट्स यू, ही परमिट्स यू टू डू दिस, सो वहां से भी मुझे लगता है कि वो जो सारा एक प्रॉब्लम आता है कि परमिशन जो है वो ग्रांट एक मर्द की तरफ से होगी, एंड वहीं से हमें ये सारी में आई। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि ये कहना आपने आपने बिल्कुल कहा, जैसे कि जोक्स जो है क्लासिक एक मिसोजिनी की एग्जांपल है, जो वहां से स्टार्ट होती है कि हम मजाक कर सकते हैं, आपके पास ये औरत तो इसी काबिल है कि उसका मजाक उड़ाया जाए, स्पेशली व्हेन दे आर टू पुट देम इनटू पर्टिकुलर रोल्स ऑफ, जैसे सबसे बड़ी बात आपने की वाइफ। या ओ गॉड, ठीक है, तो एक तो बात यह है, फिर ये भी कि उसका फलां का हस्बैंड, लड़कियों को कहा जाता है इतना अच्छा तुम्हारा हस्बैंड, ही परमिट्स यू टू वर्क, ही अलाउज यू टू डू दिस, ही अलाउज यू टू वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस, ही अलाउ, तो वेयर इज दिस परमिशन कि ये जो वैलिडेशन है और ये कि परमिशन हमें वहां से लेनी है? तो जब हम इस सारे फ्रंट्स पे ये भी चीजें सीधी कर रहे थे, तो दिस थिंग हैपेंड व्हिच इज मीडिया, and it has given so much comfortable space for the abusers and the harassers to exercise their harassment against women, कि मुझे लगता है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, आई डोंट नो, आई दिस इज, मुझे लगता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा तस्नीम, बट like you would also do, I believe, and many women like us would be very upfrontal and brave enough to face it, right, and be vocal about it. But I think it's a privilege that we enjoy by doing so, that we can do that. And I think we are like very, very small in numbers. If True, which doesn't even, neither here nor there, you look right? at the population and then look at the number of women like us, or even some men who are supportive,
It is like peanuts. बिल्कुल वो बिल्कुल नमक में, वो आटे में नमक के बराबर, जो जिसको कहते हैं ना, उस बिल्कुल। और फिर आपका नैरेटिव बहुत अजीब लगता है, यू अपीयर टू बी वेरी वियर्ड एंड, और ठप्पा लग जाता है ना, हम तो औरत मार्च वाली औरतें हैं, हम हम्म तो वो वाली औरतें हैं। तो ये जो आपका सवाल था कि हाउ टू टैकल विद दिस एंड हाउ टू, आई थिंक अगेन मैं जैसे हमेशा ये कहती हूँ कि द women need to be, they need to come together as a force, हम्म as one gender force, and they एक तो हमें एक दूसरे पे भी यकीन करना सीखना चाहिए। जो विक्टिम्स हैं उनकी भी बातों पे यकीन भी तो करना चाहिए ना। सबसे पहले तो हम फौरन ये कह देते हैं कि तुम्हारी गलती होगी, विक्टिम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट कि कोई भी वो है, कुछ भी वो कर रही है, दिस इज नॉट व्हाट शी डिजर्व्स एंड दिस इज नॉट व्हाट शी शुड एक्सपेक्ट। तो या ये हमें वी हैव टू कम अप एज अ फोर्स एंड वी हैव टू कॉल आउट कि ये इस तरह की चीजें नहीं होंगी, क्योंकि जिन लोगों का मीडिया तक एक्सेस है उनकी भी तो वॉइस है ना, यू एंड आई हैव अ वॉइस। So we हम्म have to be very, very open about it, very unapologetically aggressive about it, if we will not allow this. I think कि शायद उससे थोड़ा सा एक सेंटिमेंट, एक वेव क्रिएट हो कि हाँ हम इस बात को रोक सकते हैं। इतनी मैं आपको बताऊं तकलीफ है बात है, आई एम श्योर कि आप लोग तो रिसर्च कर रहे हैं, बट पीपल आई नो पर्सनली, लड़कियां इतनी मुश्किल से तस्नीम काम करने के लिए घरों से निकलती हैं, जो बिल्कुल। लोअर, जिनकी मतलब लोअर मिडिल क्लास की बात कर लें, इवन मिडिल क्लास की बात कर लें, इतनी एक स्ट्रगल होती है बेचारी। पहले तो पढ़ती हैं, फिर वो नौकरी करना चाहती हैं, और घर से निकलने के लिए घर के मर्दों से पहले एक जंग लड़ती हैं, बिल्कुल। भाइयों से, बाप से, नेबर्स से, फैमिली से, कि शी वर्क समवेयर, अक्सर हमने देखा दे हैव टू कवर देमसेल्व्स विद अबाया फ्रॉम हेड टू टो, just या to so जस्ट टू yeah, to conceal फैसिलिटेट। their identity and या safety protection के जी। हम we appear to be pious women, good women, अगर हम ढक के जाएंगी। हम्म तो चलो, मुझे लगता है इतना एग्जॉस्टिंग है अगर आप ये देखें, ये पूरी जर्नी जो आपने घर से ही शुरू की है, कि आप ऑलरेडी पहले तो आपको ये पता है कि आप कुछ ऐसा करने जा रही है जिसमें सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, हम्म तो यू आर वॉकिंग अगेंस्ट द करंट। फिर आप जब अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, तो मेन हु आर देयर, अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के फेवर्स वो चाहते हैं लड़कियों से, या and again media plays a vital role, they demand for such photographs and videos. I mean, I know people personally who've gone through this, and if you हम्म don't do that, then we will not let you stay here. एंड यूर आउट। ठीक है। या अब मैं ये समझती हूँ कि एक तो पहले ही लड़की की जगह कम है काम करने के लिए, फिर वो उसके लिए एक स्ट्रगल थी कि हाँ आकर पहुंचना, फिर आपने उसको ये यकीन दिलाया कि until and unless you give us this favor, तुम्हारा मेरिट तो और कोई नहीं है, तुम्हारा मेरिट तो बस ये है, हम्म वी डोंट केयर फॉर योर इंटेलिजेंस, योर आपका कितनी आप डिजर्व करती हैं यहाँ पर होना, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, वो हम नहीं करते। आपको अगर ये आप हमें देंगी तो यू आर गोइंग टू स्टे हियर, अदरवाइज यू हैव अदर women coming. So many women end up giving into it, and I don't blame them. I Despite the don't fact blame that them. we have a law against sexual Yes, harassment at workplaces and absolutely. उसमें सजा भी है, सब कुछ है, but how many women have we seen go, file a complaint, and those who have actually filed the complaints, they have been struggling, getting justice. Absolutely. नहीं मिलता उनको, और सारी बात वही हो जाती जो आपने पहले की कि you must have done something to, जी जी। excite, entice. इंस्टिगेट दिस, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये भी कि आपने ये किया होगा, और फिर ये कि हमारी रेपुटेशन, हमारी तुम्हें, हमने तो तुम्हें कहा था, व्हेन आई डिड वर्किंग वुमेन दिस सीरीज, माय वेरी क्लोज पीपल फ्रॉम माय फैमिली आल्सो, वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, मतलब वेरी वेल प्लेस्ड इन द सोसाइटी, टू ऑफ द मेन सेड कि एक तो पहले ही बेचारी लड़कियां मुश्किल से काम करती हैं, ऊपर से तुमने उनको ये बता दिया कि तुम घरों से मत, दिस इज हाउ they perceive the They, message, yeah, right? interpreted. बिल्कुल, कि ये है कि बहुत खराब है, तो तुम घर में बैठी रहो, बाहर नहीं जाना, बाहर। अच्छा, और जब ये कह रहे होते हैं मर्द के बाहर नहीं जाना, खुद वो बाहर जा रहे होते हैं, आप ही तो बाहर का माहौल बना रहे हैं ना, हमें कह रहे हैं आप बाहर ना जाओ। प्रोटेक्टिंग अ वुमन बाय सेइंग यू डोंट स्टेप आउट हम्म बिकॉज यू कांट डू डील विद दिस, तुम हमारा ऑनर हो, हमारी तो इज्जत नाक में मिल जाएगी, तुम अंदर बैठो, काम नहीं हाँ, करो।
Exactly. Also young women who are not married, जो पढ़ लिख के यहाँ आई हैं, also married women in a marriage but need to struggle actually to go and work and come back to the home. मैंने उनकी guilt देखी है, Hmm. which they carry with them, और मैंने उनके साथ सवाल जवाब होते हुए देखे हैं उनके हस्बैंड्स के, उनके इन लॉज के, कि क्या माहौल है, कितने हैं, अच्छा तुम ये वाली जॉब कर लो, यहाँ सिर्फ औरतें हैं, यहाँ मर्द नहीं है, तो उसमें कहीं पे भी कोई ये नहीं सोचता कि ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट है तो है क्यों, उसको ठीक किया और जाए। क्रिएट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है क्रिएट, एग्जैक्टली, और आई क्यों आस्क करने दिया जाए। आई एक्चुअली आस्क्ड मेन कि अगर आप अपनी बेटियों को या बहन को या जिसको भी घर पे रखना चाहते हैं या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या कहते हैं हम ड्रॉप करेंगे, हम पिक करेंगे, हु आर यू प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम? मेन एग्जैक्टली, एंड लाइक एग्जैक्टली, यू. So बिल्कुल, why don't you talk to men and tell them, what is wrong in their behavior, rather than एब्सोल्युटली। restricting women or putting or pushing them behind the four walls. आपको उन मर्दों से बात करनी चाहिए, उन लड़कों से बात करनी चाहिए जो कॉलेजेस के बाहर खड़े होते हैं लड़कियों के इंतजार में कि वो निकलें तो वो आवाजें कसें और पीछा करें और नंबर्स ले लेते हैं, एक दूसरी लड़कियों के नंबर्स अब उनके आप पास आ जाते कभी हैं। देखें लड़कियों को बस स्टॉप्स वगैरह पे, दे लुक हरास्ड एंड दे लुक बिल्कुल सो स्केर्ड. वो स्कैर्ड। बेचारी फाइलें और छुपा के यूं खड़ी होती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एज इफ द बॉडी इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. फिर तो हम्म। अबाया में रिफ्यूज ले लिया है. अब माई हार्ट गोज आउट फॉर देम, बिकॉज मैं यही तो कह रही हूँ कि इतना एग्जॉस्टिंग है टू लिव इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, जहाँ जो घर से शुरू होता है, सुबह उठते ही आँख खोलते ही पहले तो अपने अपने बाप को आपने जस्टिफाई करनी है, अपनी प्रेजेंस, फिर भाई को करनी है जो आपसे छोटा ही होता है हम्म. यूजली, क्या मगर वो मर्द पहना है। है, क्यों पहना है, हाँ, कैसे पहना है, दुपट्टा, दुपट्टा सबसे पहले ठीक हो लिपस्टिक जाए तो क्यों भाई। लगाई है, बाल क्यों खुले रखे हैं, हम्म। काजल क्यों हम्म। लगाया है, मतलब किसके यस, लिए मेकअप कर रही हो, काम पे जा रही बिल्कुल। हो, सीधे जाओ. दीज आर द फोन पे नॉर्म. किससे बात कर रही हो, किसका मैसेज आ रहा है, सो कोई। And then on top of it, they have to face abusive languages and abusive tweets and everything. मतलब कहाँ पे खत्म होगा ये सिलसिला? एंड इट नेवर स्टॉप तस्लीम, आपको याद होगा इवन बिफोर सेल फोन्स व्हेन वी हैड लैंडलाइंस, डम कॉल्स कितनी आती थी, हम्म. कैसी कैसी हरासमेंट होती थी हमारे साथ, I know phone यू नो। उठाओ and there will be a fill these sentence and यस, I still विल remember शॉक यू। those. Yeah, I still remember या, those. सो ये नहीं है कि जी सिर्फ हमें आज ही ये फेस करना पड़े, हमें तो आप, टेक्नोलॉजी हेल्प्स द हरासर्स इन आवर सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली। और आई रिमेम्बर जब बिल्कुल नए नए सेल फोन्स आए थे, आई वाज वेरी यंग और मेरा फोन खराब हो गया। एक तो तब उस जमाने में फोन ही बड़ी मुश्किल से होता था, फिर वो खराब हो जाए तो उसे ठीक कराना समझ में नहीं आती थी, कहाँ से ठीक होगा ये। सो आई वेंट टू अ प्लेस इन इस्लामाबाद, राइट Hmm. इन ब्लू एरिया, एंड आई वेंट टू अ प्लेस, एंड मैंने उनको जाके, और वो एक ऑफिस था, बड़ा अच्छा प्रॉपर सेटअप, काउंटर्स बने हुए थे, मैंने वहां जाके अपना फोन दिया और मैंने कहा कि जी इसको ये मसला, उन्होंने कहा ठीक है, आप 4 दिन बाद आके ले जाओ। ओके, आई वेंट आफ्टर 4 days, मैंने कहा हो गया ठीक है, मैंने कहा ओके, and they had my phone. I came home. When I came home and I opened my phone, it was full of nude men photographs. Okay, I was totally devastated. मुझे हाथ से पहले फोन छूट गया, Hmm. मुझे अपना पहला एक्सप्रेशन ये याद है, and I felt so scared. I felt as someone is physically present there. It's not only the phone. You feel Till I exposed, vulnerable, you feel like, absolutely you threatened. feel you are not fully clothed or you are Yes, naked in exactly. front of somebody. वो प्रोजेक्शन आप पे हो रही होती है, बिल्कुल. एंड आई वाज सो अपसेट कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो रेफरेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम स्टेड इन माय हेड, कि मैं घबरा जाती थी कि ये क्या है। हाँ, एंड आई जस्ट थॉट कि ये हाउ कैन एनीवन जस्ट डू दिस, बिकॉज आई वाज द वन हु वेंट देयर। And this must be happening to so many girls, Many, women. so many, and this It's still happens. and can you imagine that it's still happening in today's time? We have a gynecologist, writer, Dr. Tahira Kazmi. जी जी। जिनके साथ हम प्रोग्राम भी करते हैं, तो वो अपने प्रोग्राम में ही हमें बता रही थी कि
she obviously she is a very bold woman. She Hmm. doesn't take any kind of nonsense, and she, you know, gives her rebuttal very, very quickly. So she said that somebody sent her the body parts की picture, and she said कि मैंने उसको कहा कि माँ सदके, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ बेटा, मैं तो ये चिथड़े गोश्त के हर वक्त देख रही होती हूँ, Hmm. ये तुम ये दिखा के क्या करोगे? बट शी इज एन एक्सेप्शन, you know. Yeah. Yeah. Women generally, I would probably just throw my phone away. That I'm happened to me like, ना. I've felt harassed. मुझे तो लगा कोई आ गया है, मेरा है कोई आसपास. मैं yeah, इतना खौफजदा हो गई थी, आई एम टेलिंग यू, exactly. कि Or अभी हम and अपने आप को if बड़ी अवेयर और बोल्ड people औरतें like समझते हैं. us, you know, educated, यस. liberated, empowered, अवेयर. जितने भी बुराइयां हैं वो हम में हैं इस सब वक्त. में है, हाँ. और वो बिल्कुल. अगर इतना थ्रेटन फील करती, तो आप समझे कि वो बच्चियां, जो वो खवातीन जो घर से सीधी ऑफिस से निकल कर जा रही हैं, वापस आ रही हैं, उनके साथ जब ये होता है, और ये होता है, आपको हमेशा ही हर तस्वीर वक्त. वापस से आती हैं आपके. बिल्कुल. मुझे याद है कि कॉलीग्स, बॉसेस. एक, एक लड़की ने मुझसे शिकायत की थी. शी वॉज वर्किंग इन सम ऑफिस, जिनके कुछ लोगों को मैं जानती थी कि मेरे डेस्कटॉप पे somebody sends me all these emails, पिक्चर्स. सो फिर मैंने आगे जाके बात की, और फिर दे आप फाउंड. सोचें कि जी जी, आई नो somebody जो who was getting married, a young girl, and she was in a relationship with some other person at some point. उसकी जिस दिन उसका निकाह हो रहा था, the entire family and the friends got a thread of emails with her pictures. You know, I mean, just imagine the state she was in at that point. आई विश तो कि बस, यही काम अगर हम खवातीन मर्दों के साथ भी कर सके, मतलब बड़े there आराम से कर सकती there हैं. are two in a relationship. It's not just a woman in a relationship. Exactly. There's a man in a relationship That's as. exactly what I did in Working Women, that उसने कहा मैं वायरल करती हूँ वीडियोस, तुम क्या हाँ, करोगे. एग्जैक्टली, बिल्कुल. That was something that I was saying कि हम भी कर सकते हैं ना. ब्लैकमेलिंग तो हम भी कर सकते हैं आज. हमें एग्जैक्ट. डराया जाता है कि अगर आपने एक्सपोज कर दिया तो आप तो बहुत ही आपका तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी, जो उड़ा दी जाती हैं. लेकिन हम्म. जब आप लाइए, फिर हम खुद एक्सपोज होते हैं. आए. तो आई थिंक धज्जियां उड़ाने वाली जो बात है, किस लेवल तक जाएंगे धज्जियां उड़ाने में? आई थिंक वी नीड टू ऑल्सो, आई डोंट नो हाउ, बट कन्वे द मैसेज टू दीज women एंड गर्ल्स कि इस खौफ को निकालें या इस खौफ से बाहर आए. अब वर्किंग हम्म. वुमन में कितनों ने वो एक पॉजिटिव मैसेज लिया, वी डोंट नो, बिकॉज जी. ऐसे ड्रामे देखते भी बहुत लोग कम है, वो सास बहू के झगड़े और वो ज्यादा. ज्यादा पॉजिटिव नहीं लिया. जी जी जी. तो उसकी रेटिंग्स भी नहीं होती हैं फिर. मुझे कहा गया कि आपने ये क्यों दिखाया है, वो लड़की बदनाम हो जाएगी. हम्म. आपको ये नहीं दिखाना चाहिए था, आपको जाके दिखाना चाहिए था कि कहीं जाके साइबर क्राइम के उस पर रिपोर्ट करती. मैंने कहा आप करें, पर मुझे हम्म. बता दें कि आप पाएंगी आप साइबर क्राइम में क्या होता है वो भी हमें पता है. हमें पता है. क्योंकि ऑन फॉर दिस प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग विद साइबर क्राइम एफआईए का जो जी. है, तो पीछे एग्जैक्टली की मदद कर रहे हैं. बट द थिंग इज कि उनके भी हाथ बंदे भी होते हैं. वो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि जी ये मुल्क दुश्मन है फलाना है, वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. वो जेंडर इश्यूज में, विमेन इश्यूज में तो कोई खास बिल्कुल इंटरेस्ट. इंटरेस्टेड नहीं. एक्चुअली बिल्कुल सही कह रही हैं आप तस्नीम. दिस इज व्हाट आई आल्सो वांटेड टू ब्रिंग अप के आप ये देखिए कि ये काम, हमारी स्टेट इतनी पेट्रियार्कल है. हम्म. ये काम अब मैं आई वाज आई थिंक कुछ दिन पहले somebody was had shared this with me, and then I read the entire article कि फिनलैंड में, आई थिंक फिनलैंड इज द वन, फिनलैंड इज डूइंग वंडरफुल वैसे, कि उन्होंने अपनी एक मीडिया लिटरेसी को, दे आर टॉपिंग द इन रैंकिंग. जिन लोगों ने अपनी मीडिया लिटरेसी को इम्प्रूव किया है, तो उनका करिकुलम स्टार्ट हो जाता है किंडरगार्टन से, हम्म. कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन क्या होता है. आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको डिजिटली मैनिपुलाइज किया जा सकता है, कैसे मैनिपुलेट हो जाते हैं डिजिटली आपके इमेजेस. आपको जज करना आना चाहिए बिटवीन फेक एंड फैक्चुअल न्यूज एंड फिगर्स. किस तरह से डेटा के थ्रू आपको गलत डेटा फीड इन करके आपको ये एक माइंडसेट को क्रिएट किया जाता है जो कि सही नहीं होता. हम्म. फ्रॉम किंडरगार्टन उनके करिकुलम का ये हिस्सा है कि बच्चे ये करना सीखते हैं, एंड दे कैन सिफ्ट थ्रू द मीम्स, दे कैन सिफ्ट थ्रू द ट्वीट्स, एंड दे कैन एक्चुअली पिन पॉइंट दिस इज फेक and this हम्म. is sexual harassment or this is something crossing the boundaries. And ये है
एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया का काम. एंड एज अ नेशन दे हैव देयर मीडिया लिटरेसी वीक व्हिच दे सेलिब्रेट एंड दे वर्क टुगेदर, क्योंकि आप देखें वी कैन नॉट अवॉइड दिस टेक्नोलॉजी, वी आर पार्ट ऑफ इट. And ये grow कर रही है with artificial intelligence and everything coming up. We all have, this is going to be a permanent workspace, and it is already happening. So until unless you give it a very strong education behind it कि इसको किस तरह हम इसको काम में ला सकते हैं, कैसे हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं चीजों को, और कैसे एक छोटे से बच्चे को जिसने इसी में जीना है ऐसी टेक्नोलॉजी में, उसको ये अवेयरनेस और एजुकेशन है कि क्या होता है ये मीडिया का रोल, और ये क्या क्या कर सकता है, कहाँ गलत है और कहाँ सही है. ऑल द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, डेनमार्क, एवरीबडी इज डूइंग इट. तो मैं ये कहती हूँ कि हमारी तो इतनी स्टेट ही इतनी पेट्रियार्कल है, वो तो एडवोकेट कर रही होती है ना, एंडोर्स कर रही होती है पेट्रियार्की को. तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ तो बाकायदा कैंपेन्स स्टेट लेवल के ऊपर चलनी चाहिए. इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर करिकुलम के औरतों को आप सेक्सुअली हरास करते हैं, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो कि मीडिया के ऊपर होता है, इसको रोका जाए, और हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए करने के लिए. दैट्स हाउ इट शुड. अदरवाइज आई मीन हैट्स ऑफ टू यू, यू आर अ वेरी tirelessly courageous woman who's doing this. But again, जैसे आपने कहा, हम इतना थोड़ा सा नंबर इतना मतलब कि हम चेंज तो नहीं क्रिएट कर सकते. you need support, you need support from the state, on a you need national from level, the, on a yeah, national level. media is predominantly male. आपके यहाँ खवातीन अभी भी Entire media. परसेंटेज जी 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 जी. में 10% से ऊपर नहीं जा पाती, हॉरिजॉन्टली कहीं ग्रो कर जाती हैं, वर्टिकली नहीं ग्रो कर पा रही, कर और वो सकती. एट द मोस्ट अगर उनकी ख्वाहिश होती है तो वो एंकर बनने की होती है, बिकॉज दैट जी. पब्लिक फेस टू इट, Which is hardly journalism. जी. which is hardly journalism, it's just Yeah. managing Yeah. fights and discussion हाँ, बिल्कुल things. बिल्कुल. So डेस्क पे कोई जाना नहीं चाहता, रिपोर्टिंग कोई करना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता. क्योंकि आई स्पीक टू मीडिया पीपल एज वेल कि क्यों आपके ऑफिस में नहीं है खवातीन, जिससे कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो आती ही नहीं है, दे डोंट बिल्कुल सही बात. वांट लेट, उनको फिर कन्विंस, फिर ऑब्वियसली द सोशल प्रेशर, द फैमिली प्रेशर के रात को कराना है, कन्विंस है नहीं, हम्म. तो हमारी बिल्कुल सोसाइटी सही ये कह रहे हैं. फेवरेबल नहीं है ना, फेवर नहीं कर रही होती है. सो आई डोंट नो कि ये सिरा पकड़ा कहाँ से जाएगा. आप और देखिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में कितने केसेस निकलते हैं. अभी मैं जब पढ़ रही थी अभी भी निकले हैं फॉर यूनिवर्सिटीज में, सब. और तस्नीम हमेशा से थे, वी बीन पार्ट ऑफ ऑल दिस, I remember a हमेशा से थे. professor who was known for sexually harassing people, and he was supposed to be some kind of a spiritual figure as well जी when जी जी जी. studying. या. And no girl wanted to go to his office alone. वो एब्सोल्युटली. सब बंच में, या फिर किसी लड़के, दो तीन लड़कों के दोस्तों को साथ लेके, वो यूजुअली बुलाते थे कि असाइनमेंट देखने आ जाओ, तुम्हारे मार्क्स ऐसे आए हैं, फलाना. नो, हम्म. रूम अलोन, nobody. And you remember when the Me Too thing started, it helped a bit for a while. Yeah. डर गए थे मर्द. और मैंने खुद अपने बहुत सारे मेल कॉलीग्स को ये कहते हुए सुना है कि यार अब तो मैं अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ, मेरी कोई फीमेल कॉलीग आती है या कोई और सबॉर्डिनेट आती है तो मैं दरवाजा शरवाजा खोल देता हूँ, यार कोई पता नहीं मी टू कर देंगे मुझ पे. तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि डर गए. चलो कम से कम एक फियर है इनके अंदर कि भाई अब हम पहले तो बंद करते थे दरवाजे, अब खोलने लग गए हैं कि यार हम ना एक्सपोज हो जाए. आई थिंक कि वो मी टू मूवमेंट भी कहीं डाई आउट की है हमारे डाई यहाँ. आउट भी हो गया, आई थिंक उसका उसको बिल्कुल गलत उसमें भी लिया गया, ड्रामे जी. बने उसके ऊपर जी, जहाँ पे खवातीन गलत इल्जाम लगा रही हैं, वो प्रोफेसर बिल्कुल खुदकुशी कर ले रहे हैं. सो फिर बात बिल्कुल सारी आ गई कि अच्छा खवातीन तो फिर झूठे इल्जाम लगाती हैं, तो ये मीटू तो बिल्कुल. बिल्कुल ही गलत एक नारा है कि ये सो लगा. दिस एब्सोल्युटली दे जिस सक्सीडेड. जिस बहादुर खातून ने शुरू किया, तो उनके साथ क्या हुआ, वो तो हम्म. उनका तो कुछ भी जो और देखा ही आपने, शी लॉस्ट द केस. या एंड जिनके खिलाफ था वो तो कहाँ मजे कहाँ में. होते हैं, तो पूरी जी दुनिया जी जी जी. जगह सैर कर रहे होते हैं, और बड़े बिल्कुल मजेदार बिल्कुल है. तो बिल्कुल. और मैं ये कह रही हूँ कि जो खौफ जब इन मर्दों को हुआ तो उन्होंने एक पूरी कैंपेन चलाई टू किल दिस मूवमेंट, जबकि मुझे लगा था कि इसमें बड़ा दम है
हम वी हैव टू कम टुगेदर और खुल के कहनी चाहिए बात कि ये इस तरह से इस इंसान ने की। लेकिन वही वाली बात है कि आपने इतनी विक्टिम ब्लेमिंग की, और अभी आपने जैसे प्रोफेसर का एग्जांपल दिया था, इसमें हमारे घरों के सारे वो लोग जो अंकल्स एंड फादर्स एंड ब्रदर्स एंड ऑल जो हरास करते रहे हैं लड़कियों को, इसीलिए ना कि उनको घरों में इतनी प्रोटेक्शन है, वो इतने पेडेस्टल पे बैठते हैं कि आप कह जब कोई आप उनके खिलाफ बात करें तो कहेंगे तुम में मसला हो सकता है, उस फरिश्ते में तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल तुम क्यों बिल्कुल। ऐसे गई थी उसके सामने, तुम वहां क्यों खड़ी थी, तुमने ऐसे क्यों, तुमने कुछ कहा होगा, तुम ही इतना हंसती हो ना ज्यादा, मुंह खोल के क्यों हंसती हो, लोग गलत इसका इंप्रेशन लेते हैं। बिल्कुल। No, you can't even laugh. या It exhausts me as a writer also to see that I just end up saying that, hello, I want to write joyful stories. I want to write stories as they come. I don't want to end up as an activist. This is not what I was aspiring to be. या मैं तो कहानी लिखना चाहती हूँ बगैर सोचे समझे जैसी है, लेकिन ये कि आपको एग्जॉस्ट कर देती है, ये चीज एग्जॉस्ट कर देती है कि आपको यही चीज नहीं हमारी हल होकर हमने जिंदगियां लगा दी हैं। मुझे तो लगता है रे कि फिर वही आके आई मीन दैट सो डिस्टर्बिंग वीडियो विच वेंट, एक तो वीडियोस भी हर तरह की वायरल कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये वाली तो शायद अब कर ही देनी चाहिए, जो आपने भी देखी होगी जिसमें वो जो ना मिलके मारा है, द सन एंड द फादर किलिंग द डॉटर। या दैट वाज हॉरिबल, दैट वाज Horrible. And just imagine the entire family supporting it, somebody filming it also, you know. So उस saving the woman, they were filming it. they're filming it and it went viral. I'm sure कि वो जो फिल्म कर रहा होगा उसने उसको ब्लैकमेल किया होगा, फिर उसने कहा होगा अच्छा मैं वायरल कर देता हूँ। तो ये जो वायरल कर देने की बात है, आपको याद होगा देयर वाज एन इंसिडेंट इन पिंडी जिसमें वो कपल था जिनकी वीडियोस बना के वायरल कर दी थी, एंड दे वर फोर्स्ड टू गेट मैरिड आफ्टरवर्ड्स क्योंकि वो एक Yeah. गेस्ट हाउस रूम में उन्होंने लिया था। Oh, तो exactly. या तो ये सारा इतना यू फील सो वायलेटेड ऑल द टाइम। Like my daughter, whenever she is working on a computer, I just noticed one day कि वो अपने कैमरे के ऊपर एक टेप लगा दे। Hmm. What are you doing? तो तुम तो काम कर रही हो ना, कैमरा इज मतलब यू नॉट इन जूम कॉल और एनीथिंग, यू जस्ट वर्किंग। तो उसने कहा नो, मतलब आई एम टोटली वल्नरेबल ऑल द टाइम, आई हैव टू ब्लॉक माई कैमरा। Good तो अब Lord. मैंने सोचा कि बैक ऑफ हर माइंड व्हाइल शी इज वर्किंग शी इज मोर यू नो शी देयर इज अ फियर दैट आई एम एक्सपोज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग Yeah, अगेंस्ट। fear of all these abuses, fear of all the kind of vile comments, uh, anything that can tear you apart. Your soul, व्हाट्सएप your ग्रुप्स mind, बनते and हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं। अभी एक बना था हमारा, इट वाज अ जैज क्लब थिंग हैपनिंग, इट वाज वेरी नाइस, पढ़े लिखे सब लोग, उसमें से एक कोई आदमी था जिसने जितनी औरतें थी उन सबको पर्सनल मैसेजेस करने शुरू कर दिए, बड़े इनअप्रोप्रिएट। सो ऑल ऑफ अस became very vocal on the group and we said kick him out, he was already kicked out। और बट मैं ये कह रही हूँ कि देखे ना कि अब आप यही करना शुरू कर दें कि आप सुबह उठते हैं आपको रैंडम एक अननोन नंबर से एक अजीब सी बात आई होती है, मुझे तो बहुत आते हैं, और क्या करूं मैं नंबर बदलती रहूं अपना। दैट्स नॉट द सॉल्यूशन, that's not a दैट्स solution. द And सॉल्यूशन। again, coming back to the same, why should we be leaving the space or यस going, backwards? एग्जैक्टली। Rather than making progress and going forward, हम we are being actually pushed back जी कि जी जी। ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई हैं खवातीन, तो इनको पुश कर। हम्म। I don't know if you saw a video where this man, there's this woman reporter who is there in the market, and this random man comes and मुझे सर tries, पे उसके दुपट्टा। हम्म। and she really gives it out to him. यस You यस। know, you can be jailed for touching me without my consent. हम्म। आपने आपने ये हम्म। मुझे हाथ कैसे लगाया? बट हम्म। इतनी इतनी जुर्रत अगर सब में आ जाए, वो लड़की भी कोई आ, मुझे नहीं लगी कि बहुत ही किसी पावरफुल घराने की थी, आम सी हाँ एक आम सी लड़की थी, बच्ची थी, बिल्कुल। और उसके अंदर कम से कम इतनी हिम्मत थी। आई डोंट नो उसका आगे क्या हुआ, आई हैवंट फॉलोड दैट अप, but that is the kind of video that should be made part of, I think, every curriculum kind of thing. एब्सोल्युटली कि आपको एब्सोल्युटली। बताया जाए कि अगर मर्द ये करें तो औरतों के राइट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि उनके कंधे एग्जैक्टली। पर हाथ भी ना लगाएं उनको।
और हर इंस्टीट्यूशन में आपको जिस तरह सुबह वो एक असेंबली सॉर्ट ऑफ कर रहे होते हैं जिसमें पता नहीं क्या पढ़ा रहे होते हैं, उसमें ऐसी वीडियो चला के दिखाएं, एंड द इंस्टीट्यूशन टेक्स शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हमारे अंडर ही ऐसा कुछ हुआ तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, द एचआर डिपार्टमेंट हैव टू कम अप। आई वाज वर्किंग एट समवेयर, और वहां पे मुझे लड़कियों ने, यंग लड़कियों ने कहा कि पानी का कूलर लगा हुआ है, तो हम डिस्पेंसर से जब पानी भरने आते हैं तो द मैन सिटिंग देयर, वो हमें बहुत वियर्ड लुक्स भी कराता है और अजीब अजीब जुमले भी कहता है। अब जाहिर उनकी बैक होती थी उसकी तरह, तो उसको तो मिल जाता था वक्त कहने का कुछ भी। तो एक दफा एक लड़की ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, मैंने कंप्लेंट की, एक दफा दो दफा इग्नोर हो गई, हाँ हम कुछ करते हैं, हाँ हम कुछ करते हैं, हाँ हम कुछ करते हैं। देन आई जस्ट स्ट्रेट अवे वेंट एंड आई सेड कि लुक, अब मैं आई विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। मैं एचआर में ये रिपोर्ट ऑफिशियली भेज रही हूँ, लिख के रिटन, कि ये हरासमेंट हो रही है, एंड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डूइंग एनीथिंग against it. That person is still sitting there enjoying your security, कि जी Hmm. वो अब उसको हम मना कर देंगे, अच्छा हम उसे डांट देंगे, नहीं मतलब just you Just, have to make an example, yeah, kick give him him out. a, punish him, not Yeah, only by kicking him out but you have to, it's a crime। it's a crime वो and usually बच्चियां लड़कियां छोटी छोटी बेचारी काम करने कहाँ कहाँ से दफ्तरों में आ रही हैं, वो कहती है हम पानी, हम प्यासे कई दफा बैठे रहते हैं कि यार वो बाहर देखता हूँ बैठा तो नहीं हुआ, डिस्पेंसर के पास बैठा हुआ। तो इमेजिन दिस ऑर्डील इज yeah. सो अनफेयर, अनफेयर कि आप ये इस चीज से ही गुजरते रहें। और अब ये मीडिया पे आपको कुछ, मुझे तो अभी किसी ने कुछ दिन पहले कहा कि, बिकॉज आई ओपनली सेड कि हमारे यहाँ जो फिजिकल रिलेशनशिप है औरत मर्द का, टोटली कंफ्यूज इसीलिए है कि इतना फिल्थी बना दिया गया उसको, और इतना उसके बारे में हम अनएजुकेटेड हैं, Hmm. औरतें और मर्द दोनों, कि व्हेन यू कम अप एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये तमाशा है क्या। और Hmm. क्योंकि एजुकेटेड नहीं है लोग, सेक्स एजुकेशन नहीं है, तो मुझे तो इतना ट्रोलिंग वेरी हुई कि आपको तो पता नहीं कितने कोड़े लगने चाहिए, क्योंकि आप तो जिना को प्रमोट कर रही हैं। इमेजिन वेयर दे कमिंग फ्रॉम। Yeah, imagine the filth that's there in the यस, दिस इज mind. एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, Hmm. कि भाई आपने इतना ज्यादा सेक्स को मैनिपुलेट किया है, और इतना उसको जो कि इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप, जिसको आपने इतना ज्यादा पोल्यूट कर दिया है कि वी एंड अप हैविंग वेरी डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप्स। Exactly. शादियों में द कपल्स हैव वेरी डिस्टर्बिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। व्हाई, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम दिस माइंडसेट। And तो it's and उस पे उन्होंने मुझे कहा आपको तो कोड़े लगने चाहिए कि आप तो और ये उसी कहते पे I will talk about डॉक्टर तायरा again. उन्होंने जितना इसके ऊपर लिखा है कि द हैं प्रेशर्स जी। ऑन अ बॉय एंड अ गर्ल, मैन एंड अ वुमन, और एग्जैक्टली, वेडिंग नाइट, आई मीन वेडिंग नाइट को इतना बड़ा एक हव्वा बना देते हैं कि उसके समथिंग, जोक्स भी हैं, उसकी वो जोक्स आपने हैं पता है, बेशुमार है, मर्द बेशुमार। बैठ के जोक्स ये करते रहते हैं। इमेजिन, So a lot of times, just the man, just to prove himself, the woman lands up in hospital. She said, I've dealt एब्सोल्युटली with such हॉरेंडस, cases with यस, ruptured vagina, यस, blood and everything, and यस, you have to prove. And if your hymen is broken for any other reason, and you can't prove your virginity, हाँ वर्जिन। again you are in trouble. So ये And सारी what is चीजें the, इस तरह yeah, what is होती the हैं. criteria of proving the virginity of a man? I don't know या where the problem is there. Also, आप सोचिए ना, आइडिया क्या है, ये सारे का आइडिया is to exercise power on you, nothing else. That we are powerful. यही और तो पावर कुछ है इस, जो आपको फिर सोशल मीडिया पे जो नजर आ रहा है, वो इट इज द सेम पावर. सेम थिंग, मैं वही कह रही हूँ कि फिजिकल से यहाँ ट्रांसफर हो गया है, लेकिन मैं इसको समझती हूँ कि ये उतना ही खतरनाक और डेंजरस और तकलीफ दे है जितना एक फिजिकल अब्यूज। डेफिनेटली. सेम, आई फील द सेम, मतलब मुझे ऑफ कोर्स इट जस्ट रेजोनेटेड इन मी, एंड समबडी सेइंग कि आपको तो कोड़े मारने चाहिए क्योंकि आप तो इस किस्म की औरत है जो ये कह रही है, यू नो, नाउ दिस इज, एनीबडी कैन से दिस ओपनली And विदाउट somebody इवन, will actually come out and यस, take action. यस, Yeah, बिल्कुल। the world is अभी full of किसी को मारा है, उन्होंने 9 गोलियां मारी हैं उस एक्ट्रेस को, बेचारी वो अपने सैलून से निकल के गाड़ी तक जा रही थी, हम्म, तो शी स्ट्रगलिंग विद हर लाइफ। तो मैं यही सोच रही थी कि आपको पता है हमारी थिएटर आर्टिस्ट के साथ, हमारी डांसर्स के साथ, हमारी सिंगर्स के साथ किस किस्म के क्राइम्स होने,
बिल्कुल और वो स्वाद के तो सारे मशहूर है, बिल्कुल स्वाद की जो डांसिंग गर्ल्स उनको तो मशहूर है, they were just मश, because बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर उनके शेव कर दिए उनके सर, उनको उठा के ले गए। अभी मुझे समझ में नहीं आता कि ऑन वन साइड यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग, बट अगेन जैसे हम मीडिया की बात करें, जस्ट अकॉर्डिंग टू मी ना, कि आप ये भी तो देखें कि जिस किस्म की आपका कंटेंट एंटरटेनमेंट भी प्रोड्यूस कर रही है, exactly, I was going to ask you for on that कि या क्या क्या कर स्मॉल रहे हैं। स्क्रीन एंड बिग स्क्रीन। एनिमल वो जो एक फिल्म है, जो आई डोंट हैव अ हार्ट टू वॉच इट। Me neither, me आई neither. जस्ट डोंट, आई कांट वॉच इट। मैं सुन के ही मेरे कांप जाती हूँ। I tried for 5-10 minutes. I said no, I don't think. I दिस think इज, एंड it. इट इज टॉकिंग अबाउट दिस मैसेस की मिसोजिनी विच इज देयर। तो जो दैट्स हाउ अ मैन लुक्स एट अ वुमन इन आवर सोसाइटी। और वो आपने उसके नंबर्स देखे, उसने मतलब जितना पैसा कमाया और जितने But मर्द उसको but देखने गए हैं। but the I think encouraging part was I was reading it on Insta that लापता women, ये जी, लापता ladies ओटीटी पे उसने बीट किया उसे। उसने बीट किया. So ओटीटी इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। बट कहीं पे थोड़ा सा स्पेस अगर है तो और बिल्कुल ये होप है. सो बट वो भी तो अक्रॉस द बॉर्डर है ना, हम तो उस पे भी मुरद इल्जाम बिल्कुल। ठहराए जाते हैं कि जी आप तो बात ही वहां की करती हैं दुश्मन मुल्क की, और हम्म। उनके कंटेंट की. तो अपने मुल्क की बात करें तो अपने मुल्क में आप हम हमारे भी देख लें, अपने आप कंटेंट हमारे का, मुल्क पे ये देख मैं लें, ड्रामे आप देखती हूँ हमारे। अपना सर पीट रही होती हूँ कि ये अब तक उससे नहीं निकलेंगे. अभी लास्ट वीक के ही एक ड्रामे के इसमें कैसी माँ, ये तुम्हारी तरबियत है, बच्चियां हाँ। जो है आवारा होती जा रही हैं. भाई तो तुम हम्म। वापस मर्ज की दबाओ, मतलब हम्म। तुम सिर्फ पैदा आपका करना कंट्रीब्यूशन क्या है? हाँ। क्या है. एंड इटर्नली यही जुमला, यही नैरेटिव ठूसा जाता है और बस. And I'm very disturbed with this play going on, Gentlemen, in a way that it has been written with idea is the backdrop of MQM days, which was horrible. ठीक है? हम्म. It is like, how can you romanticize that era, जो कि कराची का नोहा है? बिल्कुल, और हम तो कराचियाइट्स है ना, हम तो गुजर आप चुके हैं यू उस बीन दौर थ्रू से. दैट। या. आप उसको रोमांटिसाइज करके वही मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आप एक रेपिस्ट को रोमांटिसाइज करते हैं। हम्म. आप मुझे फिर उस तरफ लेके जा रहे हैं कि मेरी एक, और जो स्ट्रांग बेचारी लड़की है, वो शी हैज टू बी अ नेशनलिस्ट पेट्रियट, तगड़ी लड़की, जिसको जिसके साथ एक रोमांस एक उस गुंडे का शुरू होगा, जिसको वो थप्पड़ मारती है। आई मीन गिव मी अ ब्रेक। ये हम कब इस कब नैरेटिव से निकले, हम कब सुधरेंगे. हम छूटेंगे? और आपको पता है कि ऐसे जो वायलेंस हुआ है इन दिनों में, जो जनरेशन्स की जनरेशन्स इफेक्ट हुई हैं, जो फैमिलीज हुई हैं, या क्या लाशें उठाई हैं कराची में, क्या तकलीफ से गुजरे हैं लोग। I was teaching at Karachi University from 86 till 92. और पहली दफा मैंने क्लाशनकोव जो है वो यूनिवर्सिटी में ही देखी थी हम्म। स्टूडेंट्स के हाथों में. तो जिन हाथों में किताबें और कलम होने चाहिए थे, उनके हाथों में हथियार थे. थे, दिए गए थे, ये बिल्कुल। है कि और मतलब और जाहिर है कि उसमें अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट विंग है तो फिर 6 और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी स्टूडेंट विंग्स घुसी हैं, और आपस में लड़ाइयाँ भी. इसलिए आपको अपना पावर रखना है एक यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो फिर लड़ाइयाँ भी बेशुमार जिसका नुकसान हुए, हुआ तस्लीम के स्टूडेंट्स यूनियंस खत्म हो गई, खत्म हो जिसका गई. नुकसान और हुआ, सैबोटाज किया हर गया उनको। यूनिवर्सिटी में फॉरएवर रेंजर्स लग गए, मतलब कि बंद हो गई उस तरह से. पंजाब में रिलीजियस पार्टीज टुक ओवर द स्टूडेंट्स यूनियन। और आपको पता है कि वहां यहाँ पर उन्होंने इतना वायलेंस किया, इतना वायलेंस किया रिलीजन के नाम के ऊपर, कि स्टूडेंट्स यूनियन ही खत्म कर दी आपने, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो वी यूथ ऑल लड़के लड़कियों का मिलता है, एक्टिविज्म पार्ट कर। ऑफ स्टूडेंट हमारे जमाने में हमने लिबरल बनवाई थी, जिसमें पहली दफा एक लिबरल जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ बंदा, उसने हराया जमीयत को. दैट वाज द जी, फर्स्ट टाइम. दैट वाज वे बैक इन 75 और 76. इमेजिन ना। हाँ। तो हमने तो हमारे वो एक लेफ्ट की फोर्सेस को खत्म किया गया सिस्टमैटिकली थ्रू दिस।
Yep. और आप अब उसको रोमांटिसाइज नहीं कर सकते हैं, आप इस गुंडा कल्चर को रोमांटिसाइज करने से बाज रहें। आप उसको एक इनोसेंट रोमांटिक सीधा साधा भोला गुंडा दिखाकर उसको लाइसेंस दे रहे हैं, उसको Hmm. मार्जिन दे रहे हैं, क्यों? But Bigul, मेरा सिर्फ सवाल था, why isn't there any reaction to it? Why are we just Look at the absorbed? numbers, there's 6 million plus, And 7 million people loving it, फिर and इसका this वही is scary. आखिरी किस्त पे बड़े सिनेमा हॉल में दिखाई जाएगी इसकी। जी जी जी, तो जैसे कि आपने वो मैरिटल रेप का वो सारा सीन जो क्या? तेरे बिन और उसमें हुआ था, हम्म, विच वाज सेलिब्रेटेड, उसमें इतनी आवाजें उठाई गई तो उन्होंने उसको बहुत ही और वल्गर होके चॉप करने की कोशिश की गई, एंड दे सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइड कि हमने ये किया है, ऐसा होता है, हमने किया, ऐसा होता है। भैया आप फिर, आई डोंट नो, आई जस्ट गेट वेरी वेरी confused कि the women who are playing these characters, when will they start taking a stand? exactly. When will they start saying it? We are not doing it. and we are not to say these dialogues or They can do that. They have the authority to do that. They don't do that. They just don't do it. and there's no way you can talk to them because हमारे यहाँ unfortunately the moment somebody gets a little fame, फिर they are Access block हो जाता है। inaccessible. आप बिल्कुल। उनको मैसेजेस कर लें, मेल फीमेल किसी को भी, बिकॉज हम तो ये, हमारा तो काम ही यही है ना कि हम कांटेक्ट हम्म। बुलाएं, उनसे बातें करें, कोई रिस्पांस नहीं आता है। Which is so सो unfortunate. You are responsible now. Come and sit and, अगर मैं तो कहती हूँ नहीं समझ में आ रहा तो आ जाए, बैठते हैं, एक दूसरे से बातें एक्सचेंज करते हैं, like we are doing talking, या and we या learn from each other and we correct ourselves. या एंड इट्स नॉट Right? कि आप गलत हैं मैं सही हूँ, It's not about that. इट्स नॉट दैट, इट्स It's जस्ट दैट about the well-being of a gender which has been facing the और oppression. एक जो पूरे माशरे में एक गंद फैल रही है, सोशल मीडिया को अगर बिल्कुल। हम लेते हैं, वो फिर जाहिर है कि उसका इफेक्ट हर जगह हो रहा होता है। वही आपका मेन स्ट्रीम Exactly. मीडिया भी लेके आता है, वही आपका सोशल मीडिया भी लेके आता है, एंड हु इज बीइंग अफेक्टेड और इम्पैक्टेड? इट्स विमेन, इट्स बिल्कुल। अस। एक माइंडसेट इस्टेब्लिश हो जाता है रातों रात। आपके घरों में बैठ के मर्द, आपके बहन भाई, हस्बैंड, कजन्स ऐसी ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं इंस्टा पे, आई माइंडलेसली, नो। बगैर सोचे समझे कि वो देख क्या रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड यू वुड क्वेश्चन के भाई क्या देख रहे हैं आप, व्हेन यू हियर दैट थिंग, उसकी आपको ऑडियो अगर सुनाई देता पता नहीं क्या हो रहा है, बट दे वुड स्पेंड आवर्स डूइंग इट। सो देयर इज एन एडिक्शन टू दिस। मुझे लगता है कि बड़ी इस मिसोजिनी की एक एडिक्शन भी है, दे जस्ट नॉट लेटिंग गो ऑफ इट, कि उनको एंड देन ये it's ना। the same misogyny that comes out when they see a woman in the open space, बिल्कुल। social media पे, and all these comments come. So बिल्कुल। thank you so much, Beagle. I've थैंक taken यू। थैंक यू दिस। lots of your time, थैंक as यू। you've always थैंक been यू फॉर दिस available. कॉन्वर्सेशन बिकॉज it gives You're strength. one of those rare stars who has, who has not said no to us ever. So I'm No, really because I learn a lot and I take so much strength from you people for whatever I can do as as a writer, कि मुझे मेरे narrative को बड़ी support और strength मिलती है, and I have to correct myself. इतनी misogynistic environment में रहते हैं कि we go wrong many ways without even knowing, without being Mhm. aware of it. So I need that check on me also, and thanks to Ux for that. Okay, I can, there is a person to go to, an organization to go to and ask कि भाई ये हो रहा है तो जरा मुझे बताएं कि क्या चीज है। तो I always learn a lot from you, and I always look forward to it कि हम ये बातचीत करें। Thank you, Bigul, and Thank you so much. more courage to you and more power to you. And Same you, for you, Tasneem. Thank you so much for being there. yeah, Thank and you you for too. leading. Thank you.